हे दे गाइस, आज आ गया एक नया वीडियो लेके। जैसे कि आप लोग देख ही सकते होंगे अपने थंबनेल पे, जिस वीडियो का नाम है बांग्लादेश इज़ द वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इट्स बाय प्रोजेक्ट नाइटफॉल। अगर आप लोग नहीं पहचानते तो ये बहुत ही बड़ा एक यूट्यूबर है या टिकटॉकर या सब जगह आपको इनको मिल जाएगा। प्रोजेक्ट नाइटफॉल इज़ अ वेरी बिग चैनल एंड दे आर क्लेमिंग कि प्रोजेक्ट नाइटफॉल का ये क्लेम है कि बांग्लादेश इज़ द वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये मुझे भी समझ में नहीं आया ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो का क्या इसका मतलब है। मतलब कुछ दूसरा ही हो भी सकता है, अब नहीं पता, नहीं अब इसका क्या ही इसका मीनिंग है, लेकिन चलिए देख लेते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। एंड इफ यू लाइक दिस चैनल प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, इट हेल्प्स द चैनल टू ग्रो। प्लीज आप लोग ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, बहुत जनों ने, जिन लोगों को देख रहे हैं तो 95% इज नॉट सब्सक्राइब एंड 5% आर सब्सक्राइब। सो प्लीज डू सब्सक्राइब। इसमें आपको कुछ नहीं जाता लेकिन मेरा बहुत हेल्प हो जाता है और इस चैनल का भी हेल्प होता है, जैसे कि हम लोग ऐसा न्यू कंटेंट या डेवलप कर सके इस चैनल को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक, और लाइक भी कीजिएगा, पर अभी नहीं, जब आपको अच्छा लगे तब लाइक अंत पे लाइक कीजिएगा। चलिए मिल लेते हैं आपको इस वीडियो पे ऑन काउंट 1 2 3, हियर वी गो। Let me tell you about one of the worst countries in the world. Its capital is one of the least livable cities, incredibly polluted and one of most densely populated. Traffic is insane. Poverty is just everywhere. Some of you have been asking me for a video about Bangladesh, and I can't help but ask, why? Is there even anything good about Bangladesh? Wow, Night Fam, it's actually quite difficult to say all of these bad words. But sadly, every negative thing I've said is what some people instantly think when they hear the country Bangladesh. They think it's back-minded, third world country with no power. But let this video prove you wrong. This is what the world never knew about Bangladesh. First up, I bet most of you don't know that YouTube was co-founded by a Bangladeshi German. Yes, the 2 billion people from all over the world who use this platform have to thank Jawed Karim, who even uploaded the very first YouTube video. Still on the internet, would you believe that the largest internet school in the world, which has educated over 10 million students, was also founded by part Bangladeshi Salman Khan, and the longest female-led government in the world also in Bangladesh. In fact, female Bangladeshis are so efficient and hardworking that 80% of the country's workers are actually women. Now, I am personally excited to know that Bangladesh is also a welcoming place for vegetarians like me. So much fresh fruit around, it looks so good. No wonder it's also one of the least obese countries in the world. And from keeping healthy to keeping peace, Bangladesh is also a major contributor to the UN peacekeeping operations, having the 3rd largest military in South Asia. Now, Night Fam, here comes the most impressive of all. Bangladesh was once the 2nd poorest country in the world, but now it's one of the fastest growing economies. See, only 3 years after becoming an independent country in 1971, extreme hunger killed 1.5 million Bangladeshis. Add to that the fact that the country has always been hit by massive floods. For a long time, Bangladesh was incredibly poor and politically unstable. It's never easy to rebuild your country when things are so difficult. But because bad past doesn't mean bad future, Bangladesh made an impressive shift. Not only in fighting poverty over the years, but now being a model for development for the rest of the world. Because of its booming garment industry, some people call Bangladesh the next China, economically speaking. After all, it's one of the top exporters of clothing in the whole world. And having all of these positives in mind, the land of Bengal certainly deserves much more respect than the world gives it. As someone who comes from a highly underrated country of Poland,
a very globally unpopular country where so many people don't know much about it, I am very passionate about giving credit to countries for their positives. Bangladesh may be a young country. And of course, it has so many things to work on. I could literally make a full video based on just the negatives, but why would I do it? There are so many people already who just focus on the negatives. This video is different. The fact that Bangladesh managed to become one of the fastest growing economies, literally from being the second poorest country in the world. May Bangladesh be the voice of all the underrated nations that are on the way to the top. इस वीडियो को देखने के बाद जो हम लोग समझ सकते हैं कि दिस वीडियोस टाइटल वाज अ क्लिक बेट कि क्यों बांग्लादेश वर्स्ट कंट्री है इस वर्ल्ड पे. बट आई डोंट थिंक दैट बांग्लादेश इज द वर्स्ट कंट्री बिकॉज अगेन यू नो दैट बांग्लादेश इज नॉट अ वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. देयर आर मेनी कंट्रीज विच कैन बी टोल्ड एज वर्स्ट. आप लोग जानते हैं, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बट अगेन बांग्लादेश इज नॉट वन ऑफ देम. एंड बांग्लादेश যারা আপনারা আমার পাশেই থাকেন, জাস্ট 40 কিলোমিটার্স away from here is the Bangladesh border. Just from my place, it's just 40 kilometers away and you can just cross into Rajshahi. So যারা আপনারা থাকেন বাংলাদেশে তাদেরকে একটাই কথা বলবো, that please do, like, you know, set an example to other people like you are setting right now to every other people, that Bangladesh is a country with great potential, which we know. As Indians, we know, we respect Bangladesh, and we know that they have the great potential to become a very good superpower one day. যেরকম ভাবে আপনারা নিজেদের গার্মেন্ট টেক্সটাইল इंडस्ट्रीটাকে ঠিক করছেন, वाकई में इसको काबिल तारीफ बोला जा सकता है. I will just say that this is one of the best industry growth from 1971. You can just think before 1971 it was under East Pakistan regime, and during the East Pakistan regime we know from Khan sir's video and everything. If you have not watched Khan sir, it's there. I'll leave it on the tags above. You can just go and watch. Khan sir ने अपने बताया था कि how Bangladesh was oppressed by the Pakistanis at that point, but after when they got their independence, we know rest is history. They never looked back, and now they are one of the greatest. Even I just heard that Donald Trump, and I just saw one video that Donald Trump himself, when he was a president, used to wear suits and tuxedos which were made in Bangladesh. So just see Bangladesh kotota age egiye esche, and like, you know, this is the only thing which actually makes me proud as an Indian, and having only one nation which is actually going forward with India, that is Bangladesh. Otherwise every other nations, if you see, Nepal had been given a death trap by China. Pakistan has been immensely in a death trap. Sri Lanka is going through a crisis. Only one country who is doing really good as of India is Bangladesh. So etai bolte chai, Bangladesh, keep it up, and don't take anybody's, like, you know, कोई भी कुछ भी बोले, don't take that abuse on yourself. You know what you people are. আপনারা জানেন আপনারা কি করতে পারেন আর আপনারা কেরম, তাই বেশি না করে এগিয়ে যান. I know there is a population problem in Bangladesh and as well as India also, but বাংলাদেশটা অনেকটা ছোট কান্ট্রি ইন্ডিয়ার থেকে, তাই জন্য পপুলেশন প্রবলেমটা আরও বেশি হতে পারে. পপুলেশন কম থাকলেও বাট পপুলেশনের প্রবলেমটা থাকার জায়গাটার হিসাবে বহুতই বেশি হতে পারে, অ্যাজ ইন ফর ঢাকা. অ্যান্ড বাট হয়ে যাবে, সেটাও ঠিক হয়ে যাবে, সেটাও প্রপার প্ল্যানিং করলে একদিন ওটাও ঠিক হয়ে যাবে. তো বেসিক্যালি উই অ্যাজ আ কান্ট্রি অ্যান্ড নেবার্স হ্যাভ টু ওয়ার্ক টুগেদার ইন আওয়ার বেটারমেন্ট. সো দিস ওয়াজ দ্য ভিডিও. ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও প্লিজ লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু দিস চ্যানেল. আপনারা জানেন আপনাদের এই সাপোর্টেই এই চ্যানেলটা আগে এগোতে পারে, তাই লাইক আর সাবস্ক্রাইব নিশ্চয়ই করুন. আর 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 একটা জিনিস, এই চ্যানেলটায় কমেন্ট করুন নিচে গিয়ে পরে আপনারা কি ভিডিও দেখতে চান, যাতে আমি আপনাদের ওই জিনিসটাকে পুরো করতে পারি. তাই আজকে আমি এখান থেকে বিদায় নিলাম. দিস ইজ রব সাইনিং অফ ফ্রম দিস চ্যানেল, and see you in the next video. Till then, take care and do take care of your health.